Thank you very much for inviting me here and for organizing this event. My name is Dietitian Faheem Mustafa. और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे आपने बताया we'll discuss about COVID-19 about nutritional interventions regarding COVID-19. हम चंद एक important points के ऊपर discuss करेंगे regarding COVID-19 and regarding nutritional therapy against COVID-19. सबसे पहले we'll discuss about such compounds that are actually derived from plants, that are plant based food, that are derived from plant based foods. उसका इफेक्ट देखेंगे कोविड-19 के ऊपर क्या है. Then we'll discuss about some natural products that has a therapeutic and promising effect against COVID-19. And we'll also discuss about some nutrients that can be used against COVID-19. And then we'll in the end we'll discuss about nutritional requirements. Yeah, what should be the nutritional management in ICU patients in COVID-19 and patients suffering with COVID-19 and how we can manage them in ICU. ठीक है. सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ about what are the compounds that are actually derived from plants, that are plant-based food, that are present in plant-based foods, and how they can be effective against COVID-19. Actually, coronavirus जो है that is actually is an exotic virus that cause exotic infection. Exotic infection का मतलब ये होता है that cause infection in particular area but only in animals. So पहले एक exotic virus था, exotic infection cause करता था, लेकिन last decade से इसने humans के अंदर भी infection cause कर रहा है, जैसे कि SARS coronavirus, severely acute respiratory syndrome coronavirus and MERS coronavirus, Middle East respiratory syndrome coronavirus, जिसकी outbreak 2002 and 2012 में हुई. उसके बाद ये जो COVID-19 है actually its main cause is SARS coronavirus and MERS coronavirus because it's genetically similar to SARS and MERS coronavirus. So that's why we say that its main cause, its main root is actually SARS and MERS coronavirus. So there are some compounds. हम पिछले कुछ ऐसे रिसर्च को अभी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर they have clearly discussed they have clearly identified that कि compounds like polyphenols that has promising effect against coronavirus, that has inhibitory effect against coronavirus. Polyphenols के अंदर the number one is quercetin. Quercetin is the richest source of quercetin is onion. इसके अलावा it's also present in honey, it's also present in citrus fruits, and it's present in other green leafy vegetables. So quercetin has inhibitory effect against COVID-19. Similarly, there is another polyphenol, we call it that's a mercetin. Mercetin इसका भी richest source जो है वो onion है. इसके अलावा it's also present in hot peppers and it's also present in green leafy vegetables. Quercetin and mercetin, both these are the polyphenols and that has inhibitory effect against COVID-19, against SARS coronavirus, that is a severely acute respiratory syndrome. इसी तरह एक और कंपाउंड है that is a lectins, and lectins जो है that is present in beans, that is present in lentils, that is present in peanuts and potatoes, tomatoes, इनके अंदर ये मौजूद है lectins. All these compounds we discussed about quercetin, we discussed about mercetin, we discussed about lectins. All these compounds has promising inhibitory effect against SARS coronavirus. Severely acute respiratory syndrome coronavirus के against इसका inhibitory effect है, that has a therapeutic role against SARS coronavirus. So जैसे हमने पहले बात की कि SARS coronavirus is genetically similar to COVID-19 जो है that is genetically similar to SARS coronavirus. So it means that MERS आपके जो polyphenols हैं जैसे quercetin है, mercetin है, lectins हैं, these can be used
that might be effective against COVID-19 also. बट अभी तक इसके ऊपर ये रिसर्च होना बाकी है कि कितनी अमाउंट में इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट इफेक्टिव साबित होंगे या कोविड-19 के अगेंस्ट इसका इनहिबिटरी इफेक्ट हो, कितनी अमाउंट में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है। बट ये रिसर्च जितनी भी हमने प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर कि दीज ऑल आर इफेक्टिव अगेंस्ट सार्स एंड मर्स कोरोना वायरस, तो हम इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दैट कैन आल्सो बी इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। ओके, अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में that can be used against COVID-19. Like the number one, I will discuss about garlic lesson. गार्लिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव कंपोनेंट है, दैट इज एलिसिन। एलिसिन हैज एंटीवायरल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस हो चुके हैं इसके ऊपर दैट एलिसिन हैज एंटीवायरल प्रॉपर्टी। और एलिसिन जो है इंपॉर्टेंट अहम चीज यहाँ पे ये है कि एलिसिन इज एक्टिव ओनली व्हेन वी यूज्ड इट। हम उसी टाइम एलिसिन हमें एलिसिन उस टाइम पे हम ले सकेंगे व्हेन वी यूज इट इन रॉ फॉर्म। जब हम लहसुन गार्लिक को रॉ फॉर्म में यूज करेंगे उस टाइम पे हम एलिसिन ले सकते हैं। द रीजन इज जब आप एलिसिन को रॉ फॉर्म में आपने एलिसिन को काटते हैं एंड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर एट दैट टाइम देयर इज एक एंजाइम एक्टिव होता है इसके अंदर, दैट एंजाइम नेम इज एलिसिनेज एंड दैट एलिसिनेज एंजाइम मेक, जो एलिसिनेज एंजाइम है दैट एलिसिनेज एंजाइम मेक एलिसिन। सो एक्टिव कंपोनेंट जो बन रहा है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू एलिसिनेज एंजाइम जो कि रॉ फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। अगर हम उसको कुक कर देंगे, व्हेन वी कुक एलिसिन एट, व्हेन वी कुक गार्लिक एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप जैसे हम जो है कुक करते हैं फूड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर देन दिस एट दैट टाइम एंजाइम जो है एलिसिनेज एंजाइम वो डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें एलिसिन जो उसका एक्टिव कंपोनेंट है वो ही नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप जो है रॉ फॉर्म में यूज करेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल, then it will show its antiviral property and then it can also prevent you from COVID-19. Okay, इसके साथ we also discussed about black seeds, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लैक सीड्स का। इसके ऊपर रिसेंट रिसर्च हुई है, 2020 की ये रिसर्च है, अप्रैल 2020 की, कि black seeds contain active ingredient that is thymoquinone, and thymoquinone is more effective against coronavirus than hydroxychloroquine and chloroquine. These are the drugs that has been recommended for use against COVID-19. But जो ये research कह रही है कि that thymoquinone, that is the active ingredient of black seeds, is more effective against COVID-19. So black seeds should be used. But again, इसके ऊपर quantity अभी define नहीं हुई कि how much thymoquinone we should take. But it has been decided that it has been clearly explained that it has therapeutic effect, it has promising inhibitory effect against COVID-19. And एक और important natural product that is the tulsi leaves. तुलसी, तुलसी जिसको हजारों सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके सैकड़ों मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसको फीवर के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ये डायरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, पेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट एस्थमा, इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया, इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, हेपेटाइटिस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एंड अदर सम अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। Tulsi leaves actually it has phenolic compounds that has antiviral and antibacterial properties. Tulsi leaves हमारी immunity को enhance करता है due to its phenolic compounds. उस phenolic compounds की वजह से हमारी immunity को enhance करता है against virus and bacteria. So tulsi leaves can be used against COVID-19. So COVID-19 से तुलसी लीव्स COVID-19 से के लिए में प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। So it can also prevent, it can also has inhibitory effect
and can also prevent from COVID-19. ओके, एक और प्रोडक्ट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज सीना मक्खी। सीना मक्खी जो है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कशन हो रही है कि सीना मक्खी का क्या रोल है। सीना मक्खी एक्चुअली इट्स हैज़ अ लेग्जेटिव इफेक्ट। लेग्जेटिव इफेक्ट, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सो अगर आप वो ले रहे हैं, यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड, एंड अगर आप वो लेते हैं तो इट कैन इवन कॉज डायरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से सो वी शुड नॉट रिकमेंड सिना मक्खी, बिकॉज सिना मक्खी कैन कॉज डायरिया एंड कैन इवन मेक द कंडीशन वर्स। So depend from that condition, so we should not use cinnamon in COVID-19 condition. As such, no any evidence has been reported against COVID-19 that cinnamon is effective against COVID-19. Okay. So these are our all the important natural compounds and products that should be considered against COVID-19. अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स दैट शुड बी यूज्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस, दैट हैज थेराप्यूटिक इफेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस। द नंबर वन इज दैट इज द विटामिन ए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है दैट विटामिन ए इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन ए इन कैटल्स, मवेशियों में, कैटल्स के अंदर विटामिन ए कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाता है। एंड इन अनदर रिसर्च दैट ऐसे चिकन जिनको विटामिन ए रिच डाइट दी गई, उनके अंदर इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस जो कि कोरोना वायरस की एक किस्म है, उसका लेवल, उस इनके इन्फेक्शन का लेवल कम था उन चिकन में जिनको विटामिन ए रिच डाइट दी जा रही थी। ऐसे चिकन की निस्बत जिनको विटामिन ए डेफिशिएंट डाइट दी जा रही थी, जिसकी डाइट में विटामिन ए कम था, उसके अंदर इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस का लेवल, उसके इन्फेक्शन ज्यादा था। सो विटामिन ए शुड बी यूज्ड, मस्ट बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19. Similarly, there's another nutrient, that's the selenium. Selenium also prevents from infectious bronchitis virus. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इट्स आल्सो टाइप ऑफ कोरोना वायरस, तो ये भी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सेलेनियम शुड आल्सो बी used against coronavirus, against COVID-19. Then we have vitamin C. Vitamin C prevents from low respiratory tract infection. इसी तरह we have iron. Iron भी low respiratory tract infection से हमें बचाता है. Then we have zinc. Zinc भी low respiratory tract infection से बचाता है, और जिंक आरएनए वायरस की रेप्लिकेशन को भी रोकता है। और जो कोविड-19 है ये आरएनए वायरस है, ये इसकी रेप्लिकेशन को भी रोकता है। सो जिंक, विटामिन सी, जिंक, iron, all these vitamins, all these nutrients that prevents from low respiratory tract infection. So COVID-19 में भी low respiratory tract infection हो रहा होता है. So if we use these nutrients like vitamin C, like zinc, and like iron, that actually prevent from low respiratory tract infection. So that must be used in a COVID-19. We have another vitamin, very important vitamin, that is vitamin B2. Okay? And vitamin B2, that we also call it riboflavin, and vitamin B2 reduce the activity of MERS coronavirus, reduce the level of MERS coronavirus. That's the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, जिसकी आउटब्रेक 2012 में हुई थी, और ये MERS coronavirus genetically similar to COVID-19. So vitamin B2 is effective against MERS coronavirus, so that might be effective against COVID-19. So vitamin B2 should also be used. Then we have vitamin B3. Vitamin B3 is a niacin, and vitamin B3 का बहुत अहम रोल है ICU पेशेंट्स के अंदर। ICU के अंदर vitamin B3 का बड़ा अहम रोल है। जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है, at that time
न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है लंग्स के अंदर। सो जैसे क्योंकि जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है तो लंग इंजरी हो सकती है, एंड ड्यू टू दैट लंग इंजरी न्यूट्रोफिल्स कैन इन्फिल्ट्रेट इनटू लंग्स एंड और वहां पे एक्युमुलेट हो सकते हैं। उसकी वजह से इंफ्लेमेशन हो सकती है एंड इट कैन लीड टू एयर सैक्स क्लोयर। ठीक है, सो एयर सैक्स क्लोजर होने की वजह से वेंटिलेशन डिफिकल्टी आ सकती है, वेंटिलेशन में डिफिकल्टी आ सकती है, सांस लेने के अमल में दुश्वारी आ सकती है। सो इफ यू यूज विटामिन बी थ्री, ये विटामिन बी सांस थ्री, लेने के अमल में, विटामिन बी थ्री एक मिनट मैं एक will बात prevent from ऐड neutrophils करूंगी। infiltration. ठीक है, so when vitamin B3 will prevent from neutrophil infiltration, as a result inflammation will not occur, and as a result air sac closure will not occur, and ventilation process will be continued. So vitamin B3 should be used, should be considered in ICU patients, especially the patient who are on ventilator. The last vitamin जो कि बहुत अहम है, that's the vitamin D, और vitamin D की एक्टिव फॉर्म जो है vitamin D3। विटामिन डी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च के मुताबिक जो कि 2020 की है, उसके वो रिसर्च की गई, एक अबाउट 212 पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई। उसके अंदर उन्होंने जितने भी कोविड 19 के पेशेंट्स थे, क्रिटिकल इल पेशेंट्स थे, उनका विटामिन डी लेवल चेक किया। उन तमाम क्रिटिकल इल पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, एंड देन उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को चेक किया जो कि क्रिटिकल इल नहीं थे, जो कि स्टेबल थे, उनका विटामिन डी लेवल चेक किया और उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं थी, एंड दे हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। सो विटामिन डी, और इसी तरह एक और रिसर्च की गई कैटल्स के अंदर। सो ऐसे कैटल जिनको कोविड 19, जिनको कोरोना वायरस था, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिपोर्ट की गई। सो विटामिन डी मस्ट बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड 19। Vitamin D contain active ingredient that is defensin. Vitamin D actually release some peptides, that is defensin and ethylene, and these peptides has antiviral and antibacterial property. So vitamin D should be used against COVID-19. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि we have to include all these vitamins, all these nutrients in our diet for COVID-19, to prevent from COVID-19, to enhance, to improve our immunity, to boost our immunity. So what we should use, should we eat? So the simple way, बहुत ही आसान तरीका, टेक बैलेंस डाइट। जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स बैलेंस डाइट, व्हाट आई एम आई सेइंग। बैलेंस डाइट लें, मतवाजन गजा लें। बैलेंस डाइट में क्या है कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, पूरे आप तमाम फूड ग्रुप्स से अपनी डाइट के अंदर तमाम फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें। तो दिन में ग्रेन्स, अगर मैं बात करूं ग्रेन्स, जैसे कि जिसके अंदर आपकी चपाती है, दालें हैं, ये सारी चीजें आएंगी, ये चावल हैं, राइस, ये सारी चीजें ग्रेन्स में आती हैं। इसकी जो है आपको पूरे दिन में जो है वो 6 से 11 सर्विंग्स लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपको फ्रूट्स जो है 2 से 3 फ्रूट्स की सर्विंग्स आपको पूरे दिन में लेनी है। वेजिटेबल, सब्जियों की बात करूं, 2 से 3 सर्विंग वेजिटेबल की लेनी है। चिकन की बात करूं तो आपको अपनी एक पाम साइज के बराबर, आपको अपनी हथेली के साइज के बराबर, अपनी एक हथेली के साइज के बराबर जो है कुछ चिकन या मीट या बीफ जो भी अवेलेबल हो वो लेना है। दूध भी लेना है, 2 से 3 कप आपको दूध भी पूरे दिन में कंज्यूम करना है। इसी तरह आपने तमाम फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में लेके आना है। एक ही मील के अंदर आप ले रहे हैं तो आप तमाम फूड ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप जरूर लें। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे, मुतवाजन गज़ा लेंगे, तमाम फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, एज ए रिजल्ट जो है आपका तमाम न्यूट्रिएंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो हमने डिस्कस किया जिनका थेराप्यूटिक इफेक्ट है अगेंस्ट कोविड 19, जो अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं, ये सारे अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस डाइट से ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप इजीली आपको मिल जाएंगे। The last one, we discussed about important compounds, and we also discussed about some nutrients that are effective against COVID-19. एक और जो important ओबेसिटी की मैं बात करना चाहूंगा
कि जो ओबीज पेशेंट हैं और ओबीज कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर दैट आर उनके अंदर मोर्टेलिटी रेशियो ड्यू टू कोविड-19 ज्यादा हो गई। कोविड-19 की वजह से जो मोर्टेलिटी है वो उनके अंदर ज्यादा होगी जो कि ओबीज है। द रीजन इज ओबेसिटी इंक्रीज, जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज है कि दैट इज द एयर दैट वी एक्सेल्ड, फोर्सफुली एक्सेल्ड आउट, एक्सेल्ड, दैट इज फोर्सफुली ब्रेथ आउट, वो उस एयर को बोलते हैं दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ओबेसिटी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब वो रिजर्व वॉल्यूम कम होता है, in that condition वेंटिलेशन का प्रोसेस इतने डिफिकल्ट, वेंटिलेशन में डिफिकल्टी आ जाती है, सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है। एज कोविड-19 के अंदर पहले आपका जो है लंग डिसऑर्डर है, आपका सांस लेने में दुश्वारी है, वेंटिलेशन का प्रोसेस बड़ा मुश्किल से हो रहा होता है, तो ओबेसिटी की वजह से और वो कंडीशन वर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी का रेशियो ओबेसिटी, ऐसे पेशेंट जो कि ओबीज हैं और कोविड-19 ओबीज पेशेंट के अंदर मोर्टेलिटी का रेशियो बढ़ जाएगा। So that's why ओबीज पर्सन को कि अगर ओबीज कोविड-19 पेशेंट को वेरी केयरफुली मैनेज करना चाहिए, टाइमली उसको केयरफुली उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको केयरफुली मैनेज करना चाहिए। द लास्ट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज अबाउट आईसीयू पेशेंट्स, and that is specifically related to nutrition students. If nutrition students are listening me, तो ये उनके लिए इफेक्टिव है कि आईसीयू के अंदर अगर द पेशेंट इज इन आईसीयू, अगर पेशेंट स्टेबल है देन वी कैन गिव ऑल दिस स्टफ जो कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और वी कैन प्रिवेंट दैट पेशेंट फ्रॉम कोविड-19 सेवेरिटी, और कोरोना वायरस से हम बचा सकते हैं उन पेशेंट को। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट है जो आईसीयू में है, वेरी क्रिटिकल पेशेंट है, देन व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? अभी तक जो रिसर्च, अभी तक जो एविडेंस हमें मिलता है उसके ऊपर, दैट इज के विश देयर इज नॉट स्पेसिफिक एनी थेरेप्यूटिक एविडेंस दैट वी शुड गिव एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट दैट कैन अफेक्ट अगेंस्ट, जो उसको बचा सकता है, बट हमें उसके उस टाइम पे उसके न्यूट्रिशन को पूरा करना है उस टाइम पे। तो जब जब भी आप इंट्यूबेशन पे पेशेंट को कर देते हैं, दैट मींस के व्हेन आप वेंटिलेटर पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, विद इन 12 आवर्स पेशेंट को एंटर फीडिंग के ऊपर लेके आए, पेशेंट को विद इन 12 आवर्स एंटर फीडिंग के ऊपर लेके आए। एंटर फीडिंग ये होती है कि आप पेशेंट को फीडिंग देते हैं डायरेक्टली इनटू जीआई ट्रैक्ट थ्रू एनजी फीडिंग, आप ट्यूब एंटर करते हैं थ्रू नोज एंड डायरेक्टली इनटू स्टमक, या फिर आप डायरेक्टली स्टमक में भी ट्यूब एंटर कर देते हैं, उधर से आप फिर फूड देते हैं, खुराक देते हैं, न्यूट्रिशन फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटर फीडिंग। वो हम जो है जे ट्रैक में डायरेक्टली फूड को हम पास कर रहे हैं। विद इन 12 आवर्स हमें वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हमें दैट पर्सन रिक्वायरमेंट जो है वो अचीव कर सके ऑन उसी फौरी तौर पे। हमें ग्रेजुअली जो है स्टार्ट ही लो कैलोरी से, फ्यू कैलोरी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम मूव करेंगे इसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज की तरफ। अगर पेशेंट जो है if the patient is also suffering from some other conditions like GI discomfort है, like उसको डायरिया है, या फिर IBD का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, या कोई और GIT इश्यूज है, GIT डिस्टर्बेंस है अगर पेशेंट के अंदर, in that case हम एंटर फीडिंग तो नहीं दे सकते, then we will move towards the parenteral nutrition। ठीक है, तो पैरेंटल के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। हम जो प्रोटीन है, एक अहम बात, जो प्रोटीन है 1.2 to 2 ग्राम पर केजी देंगे, और बाकी जो है कैलोरीज जो है पैरेंटल के अंदर भी हम मैक्सिमम कैलोरीज हम नहीं दे सकते, जितनी उसके जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उसके नहीं, स्टार्ट फ्रॉम फ्यू कैलोरीज एंड देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द रिक्वायर्ड कैलोरीज। So in this case, in this way we can manage nutrition. We can give nutrition to the COVID-19 patients in ICU.